Chapter 7, Moon and Artificial Satellite, Bookwork and Notebook Work. Notebook work. In this we will discuss about new words, glossary, question answer and HOTS. New words. 1. Satellite. 2. Revolution. 3. Craters. 4. Astronauts. 5. Reflect. 6. Phases. 7. Spacecraft. 8. Tide. 9. Eclipse. 10. Weather forecasting. 11. Transmitted. 12. Navigation. 13. Orbit. 14. Shadow. 15. Exploring. Glossary 1. Craters holes on the surface of moon. मून की सरफेस पे जो गड्ढे होते हैं उन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं. 2. Tides the rise and fall of sea water. जो सी वाटर है एकदम से ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है, जो उसकी ऊंची लहरें होती हैं उसको हम टाइड्स बोलते हैं. Eclipse the shadow of the earth and the moon due to blockage of sunlight. जो भी शैडो बनेगी अर्थ की या मून की सन की लाइट के ब्लॉक होने की वजह से उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं. एस्ट्रोनॉट अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन स्पेस. वो पर्सन जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं. 5. फेजेस डिफरेंट शेप्स ऑफ मून. अलग अलग जो शेप्स मून की बनती हैं उनको हम फेजेस बोलते हैं. 6. नेविगेशन द एक्ट ऑफ फाइंडिंग लोकेशन. किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड करने की जो एक्ट होता है उसको हम नेविगेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. Question 1. What causes moon to shine? Answer. The moon shine because of the reflection of sunlight. Moon shine करता है क्योंकि sunlight का reflection उसके ऊपर आता है, इस वजह से moon shine करता है. Question 2. What causes the extremes in temperature on the moon? किस चीज़ की वजह से जो moon है उस पर extremes of temperature होते हैं? Answer. Lack of atmosphere. Atmosphere नहीं होने की वजह से moon पे extremes of temperature मिलता है. Question 3. How are low and high tides caused in sea? Answer. Due to attractive force, that is the gravitational force of the earth and the moon, tides are formed. जो gravitational force होता है अर्थ और मून के बीच में उसकी वजह से tides form होते हैं. Question 4. Differentiate between solar eclipse and lunar eclipse. Answer. Solar eclipse occur when the moon comes between the sun and the earth. Lunar eclipse occur when the earth comes between the sun and the moon. सोलर एक्लिप्स के अंदर में सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और ल्यूनर एक्लिप्स में सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है. Question 5. What is an artificial satellite? Answer. An artificial satellite is a man-made object that revolves around the earth. Artificial satellite एक man-made object है जो अर्थ के अराउंड revolve करता है. Now last is HOTS. 1. There is a silence on the moon. Why? Because there is no atmosphere on moon. Moon पे atmosphere नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे silence रहता है. 2. Weather forecasting day satellite is extremely useful for fishermen and farmers. Why? Answer. Because they provide information about storms, cyclones and rains, etc. जो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट हैं वो फिशरमैन और फार्मर्स के लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि वो हमें पहले से ही आंधी, तूफान या रेन इनके बारे में बता देते हैं. 3. During a total solar eclipse, cuckoo saw some birds going back to their nest. Why were they going so? Why were they doing so? Answer. When the eclipse happened, birds think that it is night time. So they go back to their nest. जब एक्लिप्स होता है तो बर्ड्स को ये लगता है कि ये नाइट का टाइम है, इस वजह से वो वापस से अपने नेस्ट की तरफ मूव करती हैं. नेक्स्ट इज द बुक एक्सरसाइज. इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल-अप्स एंड आंसर इन वन वर्ड. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 1. The natural satellite of the earth is answer C. Moon. 2. This is not found on the moon. Answer is A. Atmosphere. 3. The gravity of the moon is dash of the earth's gravity. Answer B. 1/6. 4. The first man to step on the moon's surface was answer B. Neil Armstrong. 5. Tides are caused by the gravitational pull of the answer B. Moon.
6. The global positioning system works with the help of dash satellite. Answer C. Navigation. True false. 1. There is life on the moon. False. 2. The moon reflects the light of the sun. True. 3. The high tides occur on a full moon day. True. 4. Artificial satellites have their own light. False. 5. The first artificial satellite was launched by Russia. True. Phillips 1. The large circular hollows on the moon's surface are called dash craters. 2. The highest tide occur at the time of dash and dash, full moon day and new moon day. 3. Solar eclipses are of two types, dash and dash, partial and total. 4. A lunar eclipse occurs when the dash comes in between the dash and the dash. So it is Earth comes in between the sun and the moon. Answer in one word. 1. Number of days taken by moon to revolve around the earth. So it is 27 days and it varies from 27 to 29 days actually. 2. The moon comes between the sun and the earth. This is called solar eclipse. 3. The man-made objects that revolve around the earth. So these are the artificial satellites. 4. The year when the first artificial satellite was launched. It was 1957 and was launched first by the Russian scientist. 5. The year when the first Indian satellite was launched. It is 1975 and the first Indian satellite was Aryabhat. So thank you students, we have completed our chapter 7. So complete your book exercise works and notebook work in your books and copies.